ठीक है, तो starting with the first question here, and they've asked us question number 1, Mr. Murthy. Question number 1, it is of contract act. I repeat everyone, always your question number 1A will be of contract, always. Mr. Murthy was traveling to Manali with his wife by bus of Himalaya Travels. Due to some technical default in the bus, the driver has to stop the bus in the midway in the cold night. Driver advised the passengers to get the shelter in the nearest hotel, which was at the distance of 1 kilometer from the place. Now what happened? बस खराब हो चुकी है और ड्राइवर ने कहा है कि आप लोग बाजू के होटल में चले जाइए. The wife of Mr. Murthy got cold and fell ill due to being asked to get down, and she was had to walk in cold night to reach the hotel. बीवी बीमार हो गई, ठंड में बाहर निकली, चली तो मूर्ति ने केस फाइल किया हिमालय ट्रैवल्स लिमिटेड पे कि आपकी बस के मिस हैपनिंग पे हमारी वाइफ को ट्रैवल करना पड़ा वॉकिंगली इन द कोल्ड नाइट एंड बिकॉज ऑफ इट शी फेल्ट इल, सो आई एम क्लेमिंग डैमेजेस फ्रॉम यू. अलॉन्ग विद डैमेजेस में क्या क्लेम किया? पर्सनल इनकन्वीनियंस डैमेजेस, होटल चार्जेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिज वाइफ. Explain whether Murthy will get compensation for which he has filed a suit. तो क्वेश्चन इसमें इक्वेशन जो आप सुन रहे हो उस किस रेफरेंस में दिया गया है? बट दिस इज इन रेफरेंस टू डैमेजेस. डैमेजेस आर ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, रिमोट एक्सेट्रा. हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा डैमेज वो लोग क्लेम कर पाएंगे, कौन सा डैमेज वो लोग क्लेम कर पाएंगे और कौन सा वो लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे. तो क्वेश्चन के अंदर डैमेज 3 प्रकार के पूछे गए हैं. हम यहाँ से देखिए तो एक है इनकन्वीनियंस, पर इनकन्वीनियंस, होटल चार्जेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. भाई आई बिलीव यहाँ पे पर्सनल इनकन्वीनियंस और होटल चार्जेस जो है that will be an ordinary damage for you all, and medical treatment for his wife will be counted as a special damage जो आप कम्युनिकेट करोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकता. क्या ये यहाँ पे सोल्यूशन में बच्चों? देखो, Mr. Murthy can claim. I hope you can see the solutions. Please confirm. Yes. तो यहाँ पे लिखा है Mr. Murthy can claim damages for the personal inconvenience and hotel charges, but not medical treatment for his wife because it is a remote or indirect loss. जिसके लिए आपको कम्युनिकेट करना जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. इसी के साथ we have finished question number 1 का reference. Anyone having any doubt, you can just message me back with the same. Question number 2. I hope you can see the question. Rohan Limited. Always you will have question number 2 of always of companies only. So Rohan incorporated an OPC. The memorandum of OPC indicates the name of his brother Vinod as the nominee of OPC. However, Vinod is starting his new business in abroad and needs to leave India permanently. Due to this fact, Vinod is withdrawing his consent of nomination in the said OPC. Identify, is it mandatory for Vinod to withdraw his nomination? Sir, law कहता है कि nomination का जो बंदा होगा OPC में वो हर बार क्या होना चाहिए? He has to be Indian citizen. If you are living permanently, if you are living India permanently, यहाँ पे तो आपका residential status of 120 days in a year apply नहीं हो पाएगा. And if that is not possible, तो आपका यहाँ पे OPC का nominee बनना मतलब का नहीं है. Therefore, we can say that Vinod will not satisfy the condition. Therefore, he should withdraw his nomination. यहाँ पे पूछा गया है, can Rohan make his nomination his 17-year-old son as a nominee? We have learned here that minor cannot be a nominee. Therefore, Rohan cannot make his 17-year-old son as a nominee. Guys, can you please react? And are we clear with question number 2? Now, what happens here is 2 marks का equation, second mark 2 marks. So you don't write a lot. आपको समझ में आना चाहिए 2 mark लिखना है, तो इसलिए half of 3-4 line लिखा. Point number 1, point number 2, and you are done with it. Question number 1C, always SOGA. A breach of condition shall be treated as breach of warranty. Explain. A breach of condition shall be called as breach of warranty. Explain. Now, guys, breach of condition को breach of warranty कब treat किया जा सकता है? We have referred this in the class also. खुशबू, if you remember, ये वाले part में 4 question आते हैं हमारे notes में भी है question answers के. When the buyer waives the performance of the condition, he will treat condition as warranty. Where it is specified that the buyer has not waived the condition but decided to treat it as warranty, where the contract is not separable, the buyer has accepted a part of it. If you remember the same, हमने मैकडॉनल्ड का एग्जांपल लिया था जब मैकडी में हमने
हैप्पी मील लिया हो और एक पार्ट एक्सेप्ट करके खा लिया हो, तो वी कैन नॉट सेपरेट इट नाउ एंड कैंसिल इट फर्दर एंड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। तो ये चार एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हेन द ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो हमने 3 क्वेश्चंस में से 2 केस लॉस देखे और एक थ्योरी देखा। आपको whenever you are preparing for examination, you should always see the answer कि मार्क्स कितने हैं and see the questions का बेसिस कितना है। Always you should understand कि मुझे कितना लिखना चाहिए, should depend upon my marks। जैसे यहाँ पे 4 मार्क्स का है, we already know there are 4 conditions for that। So even if you remember 3, नहीं याद आ रहा है 4, still you should know that कि मेरे को 3 मार्क्स तो कवर हो ही रहा है। You should not waste your time, you should move forward। Going further, explain the term contingent contract with reference to ICAI 1872 with the help of an example. Also discuss the rules regarding enforcement of contingent contract. Now, if you just see here, it's of how many marks? It's of 7 marks. So explain the term contingent contract. I'll say it is of 2 marks. Give an example to the same. I'll say it's of 1 mark. Also discuss the rules. I know there are minimum 4 rules. 4 marks. How do I get my basis right? So I wrote the meaning. I'll get 2. I wrote the exam, I read 3. I wrote the 4 headers, I'll get 4 that is how many? 7. Very important to understand the segregation of marking schemes here. So 7 हो गया। तो what is contingent contract? If the contract whereby, चलो आपको फटाफट दिखाना है मुझे, तो यहाँ से हो जाएगा contract to do or not to do something depending upon happening or non happening of the happening or non happening of the uncertain future event। यार कहाँ गया? I hope you can see the screen. Contingent contract. Example: A contracts to pay B rupees 1 lakh if B's house is burnt. In this case, contract क्या है? क्या अगर हाउस जला तो ही मिलेगा। So we can say as an example of contingent। तो मैंने क्या बोला था आपको? यहाँ पे 2 मार्क, यहाँ पे 1 कवर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आगे? Please tell me, am I audible to you all? I got some message regarding my audio. Am I audible to you all? मैसेज करना पड़ेगा आपको मुझे। Okay, is it audible now perfectly? Yes sir, great। तो now खुशबू conditions of enforcement में आता है contingent contract depending upon happening of an event, depending upon non happening of an event, depending upon happening within fixed time and depending upon non happening within fixed time। I always believe ये 4 आपको याद रहने चाहिए, सबसे easiest 4 और 4 मार्क के लिए ही काम में आएंगे। कौन से? Depending upon happening of an event within happening of an event, depending on non happening of an event, happening within fixed time and not happening within fixed time। ये 4 हो गए। This 4 contingent contract depending on happening becomes enforceable when the event happens, depending on non happening becomes enforceable when the event becomes impossible, happening upon specified time becomes enforceable when the event happens within fixed time, and depending upon non happening becomes enforceable when the happening becomes impossible within the fixed time or it happens after the time elapsed। ये चीज 4 मार्क के लिए आपको कवर करनी है and here we get 7 marks done। यहाँ पे हम पहुंचे। क्वेश्चन नेक्स्ट इज LLP पे। ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 2, ऑलवेज क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक LLP होता है। तो अगर आपका LLP अच्छा नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 ही है जो आप फंस जाओगे। 2 में ही LLP होता है नॉर्मली, 2 ही में LLP होता है। 2 LLP। ठीक है, तो यू कैन यूज 7 marks target here। Limited liability gives benefits of limited liability of a company on the one hand and the flexibility of partnership on the other। Yes or no? ये इसका मेन रीजन क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप फर्म हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, so that is not use of partnership, it's use of company limited liability। and in a company you have partners, no sir, private limited partnership firm you have partners। how do you segregate this answer here?
every partner of LLP is agent of LLP, but not of other partners. Liability of partners will be limited, whereby flexible partnership is basically what you have internal structure to mutually agree for. आप खुद के बेसिस पे कंपनी को चला सकते हो. It's a vehicle which is less stringent and flexible, जहाँ पे Companies Act is more complex, and you have a compulsion of audits, you have compulsion of compliance of law more in case of partnership, in case of a company, as compared to partnership form. So here, if you are something better than partnership firm and something lesser than company, then the benefits of LLP comes to the picture. आपने LLP किया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा ध्यान से करने का टाइम नहीं कवर कर रहा हूँ. Now define partnership, name the essential elements of partnership. बहुत super questions है. Explain any two details. Now it's a 6-mark question. They've already given 3+3. So what I'll say that define partnership and name the essential elements of partnership is of 3 marks. Partnership is association of people, association of persons formed to carry on business. Carried on by all or any of them acting for all. ये हो गया आपका 1.5 mark. Essentials of partnership, sharing of profits, mutual agreement, business, 2 or more persons, mutual agency. ये आपने headers लिख दी है. Again, a 1.5 mark. Then told us to explain any 2 essentials. So, what I explain, sharing of profits, I'll explain that. What I explain, mutual agency, conclusive evidence of partnership. Everyone, are we getting it? Please confirm. 6 mark कैसे मिलते हैं? Hello. शाबाश. आगे जाता हूं मैं. Kapil went to a departmental store to purchase a steel pan. He asked a salesman about the area in departmental store where the steel pans are kept. Kapil बंदा एक डिपार्टमेंटल स्टोर डीमार्ट में जाता है और कहता है मुझे एक स्टील की कढ़ाई खरीदनी है, पैन खरीदना है. सेल्समैन कहता है कि उस एरिया में सब प्रकार के पैन्स पड़े हैं जहां पे स्टील के पैन भी पड़े होंगे. कपिल अपनी दुनिया में मस्त था. सेल्समैन ने बताया कि उस एरिया में जाइए. कपिल ने क्या किया, आओ ना था कुछ देखा नहीं और एल्यूमिनियम पैन खरीद लिया. तो जब घर पे जाता है, सॉरी, तब सेल्समैन ने ये देखा कि भाई कपिल ने तो कुछ और खरीद. Kapil reached home. Hello, am I audible to you all? Sudha, please tell me now, am I audible? Okay. So what happened here was, कपिल सेल्समैन ने देखा कि कपिल बंदा जो है वो एल्यूमिनियम पैन लेके जा रहा है इंस्टेड ऑफ द अदर पैन. कपिल रीच्ड होम एंड फाउंड दैट द पैन इज एल्यूमिनियम एंड नॉट स्टील. कपिल ने केस फाइल किया डिपार्टमेंटल स्टोर पे कि फ्रॉड हो रहा है. इन दिस केस क्या हम इसको फ्रॉड मानेंगे या नहीं मानेंगे, दैट्स द क्वेश्चन. लॉ कहता है बच्चों कि merely being silent regarding a fact does not amount to fraud. In this case, कपिल को पता था कि नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता. सेल्समैन वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कपिल जो ले रहा है वो स्टील के बदले एल्यूमिनियम है. बट द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि जब सेल्समैन ने कहा था कि हर चीज वहां पे है, एल्यूमिनियम भी है और स्टील भी है, तो सेल्समैन का ना बोलना फ्रॉड माना नहीं जाता. इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, merely being silent as to material fact does not lead to fraud. Only in only case there is a duty to speak will be referring to as fraud. In the present case, since Kapil was been indicated by the salesman that the area covers many kinds of pans, still it is let the buyer be aware. Kapil should be aware of the fact that the pans will be of different kinds and should be aware for as far as buying is concerned. Therefore, Kapil was not eligible to file a suit for fraud since it is not amounting to fraud. Since mere silence does not amount to fraud.
since mere silence does not amount to fraud. Are we clear with this? Please message me. Okay. Next question comes up here is explain the rights of unpaid seller under SOGA. A theory question, rights of unpaid seller. यहाँ पे 4 headers, suit for price, suit for damages for unacceptance, reputation before due date मतलब anticipatory breach का damages and sue for interest अगर late payment किया है तो अगर आपका सेल्स हो चुका तो आप प्राइस क्लेम कर सकते हो। नंबर 2, सेल्स हुआ नहीं है तो डैमेज क्लेम कर सकते हो। आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस कर सकते हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले से कैंसिल कर दिया था, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले से कैंसिल कर दिया था तो आप एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए डैमेज क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो किया लेकिन लेट पेमेंट किया तो हम डैमेजेस के हम वहां पे इंटरेस्ट क्लेम कर सकेंगे। हेलो, कैन आई मूव फॉरवर्ड? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4A पे, discuss the rights of an unpaid seller against the buyer under SOGA. ये तो हमने कर लिया। Mr. M is one of the 4 partners in a vessel XYZ Limited. He owes a sum of rupees 6 crore to his friend Mr. Z, which he is unable to pay on due date. So he wants to sell his share in the firm to Mr. Z, selling the amount. That's right. That's all. In the light of the provision of the Act, discuss each of the following. Can Mr. M either transfer his interest in the firm by way of sale? What will be the rights of Mr. Z in case where Mr. M wants to retire from the firm after 6 months from the date of transfer? I think it's a most relevant for the examination point of view, this question. M is one of the 4 partners of XYZ. एक partner था, he had a due of 6 crore to his friend. Mr. Z, which he is unable to pay on due. Now he wants to sell his share in the firm to Mr. Z. क्या करना चाह रहा है M? M कह रहा है Z को भाई मैं तेरे को पेमेंट तो नहीं कर पा रहा हूँ तेरा 6 करोड़ रुपए का। Z, I am sorry, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे मेरा पार्टनरशिप फर्म का जो मेरा स्टेक है ना वो तुझे बेच रहा हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय अ पार्टनर। व्हाट डज लॉ से कि अ पार्टनर में ट्रांसफर इंटरेस्ट टू एनीवन एल्स, but that will not make him a partner, but he can only do so by taking consent of remaining partners. So can he do so? Can M do so? Answer is yes, provided he has taken consent of all the partners. What will be his rights in that scenario? Rights will be he can share the profits. Who? Mr. Z. He can only demand account respect to his share. But when when M retires from the firm, then he can demand what? The accounts till the date of retirement to get his entire capital in his hands. Hello, hello, hello. Can you recollect the same? Please confirm. I'll say important for examinations. Please confirm. Now, ABC Limited was into sale and purchase of iron rods. This was the main object of the company mentioned in the memorandum of association. Sorry, मैंने question 5E लेना है. Sohn is a trader in selling of wheat. Vinod comes to his shop and asks Sohn to show his some good quality wheat. Vinod, satisfied with the quality of wheat, Sohn agrees to sell 100 bags of wheat to Vinod on 10th of June. ठीक है भाई, 10 जून को wheat बेचा. Delivery of wheat and the payment was to be made in the next 3 months by 10th of September. ठीक है. If the goods are delivered, Sohn gets another customer, Vikram, in his shop and who is ready to pay higher price. Sohn sells the goods of Vinod to Vikram. Vikram has no knowledge that the Sohn is not the owner of goods. Discuss if such sale made by Sohn to Vikram is valid sale or not. Question क्या है? सोहन और विनोद,
सोहन और विनोद, सोहन यहाँ पे कौन है? सोहन यहाँ पे सेलर है और विनोद यहाँ पे बायर है ना। सोहन और विनोद का जो अग्रीमेंट 10 जून को होता है कि भाई सोहन विनोद को बीज बेचेगा, लेकिन उसके बाद डिलीवरी 10 सितंबर को होने वाली थी। वो उसके पहले देयर समवन एल्स हु इज कमिंग टू द शॉप हु इज नॉट अवेयर ऑफ इट, हु इज होम, वो कौन है? विक्रम है। कैन अ विक्रम गेट द टाइटल टुवर्ड्स द सेल? आंसर इज यस। यहाँ पे लिखा गया, कहाँ पे ये? नेमो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट which talks about exceptions to what? Bad title to bad title, good title to good title, उसका exception है bad to good. In this case हम ये समझते हैं कि विनोद जो है, Vikram will get good title toward the same if the sale is made by the original seller and the buyer is not aware of the fact that the good is already sold. In that case, new buyer is acting in good faith. Therefore, it will be called as a valid sale. Hello. Can you recollect the same? Please confirm. Even this question is basically a part of our notes. Do you agree? Confirm करो, मैं आगे जा रहा हूँ. चलिए. Am I audible? Explain. ABC Limited was into sale and purchase of iron rods. This was the main object of the company. The company entered into a contract with Mr. John to some finance related work. अरे सर, ये doctrine of ultra vires है. ધંધો છે iron rods નો અને business કરી રહ્યા છે finance નો. ચાલશે કે નહીં ચાલશે? નહીં ચાલશે. What you will write? Explain the word ultra vires contract. जो हमने लिखा है अपने notes के अंदर. Explain the case study in 2 lines. Further, hello, am I audible? Shall I repeat 6A again? Please tell me. Six A again. Okay. So 6A talks about supervening impossibility. Supervening impossibility मतलब subsequent impossibility, that is contract बनने के बाद और परफॉर्म होने से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो इम्पॉसिबल, जैसे कि चेंज ऑफ लॉ, सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रॉय होना या फिर एनीथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल, तो हम उसे कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं.
इससे क्या होता है, इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है और आप रेस्टिट्यूट कर सकते हो, एडवांस दिया तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे। मूविंग फर्दर, एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, ए एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल 1000 स्ट्रॉबेरीज, जो स्ट्रॉबेरीज टू मिस्टर बी इन यूएस, but before delivery, government of India banned export of strawberries to US. In this case, it will be called as subsequent impossibility, hence a void contract. Hello, are we clear? Okay. Now we are left with two questions, 5B and 5C. Subject to agreement by partners, state the rules that should be observed by the partners in settling the accounts of the firm after dissolution. Dissolution के बाद क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सिनारियो आती है यहाँ पे। देखो, losses should be paid out of profits, then out of capital, and अगर उसके बाद भी लॉस बचा, then everyone should contribute in profit sharing ratio. Assets will be used first to pay the debts of third parties, then the debts of partners, then the capital of partners, and then profit sharing ratio बाकी का पास शेयर हो जाएगा। अरे अभी मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ? हेलो, am I audible or not? Yes. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द लॉजिक सेज यार कि द लॉसेस शुड बी यूज्ड फ्रॉम कैपिटल फर्स्ट, कैपिटल के सॉरी लॉसेस विल बी यूज्ड फ्रॉम profits, then capital, and then again bring the new capital inside in PSR ratio. Assets will be used to pay the liabilities of the third parties, then the loan of the partners, then capital of partners, and then balance if any shall be shared among the partners in a PSR ratio. Now comes the last part. Raj formed a company with capital of 50,000. He sold his business to another company for rupees 40,000. The payment of sale, he accepted the shares worth rupees 30,000. Balance 30,000 was considered as loan. सर ये केस स्टडी जो है वो कौन सा है? दिस केस स्टडी इज कॉल्ड सलोमन वर्सेस सलोमन। इट्स अ सेपरेट एंटिटी केस स्टडी, जहाँ पे ये राज है ना, उसका नाम सलोमन था, जिसने एक बिजनेस शुरू करा था और बिजनेस था चप्पल बनाने का, जूते बनाने का। आफ्टर दैट ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी, उसने बिजनेस बेच दिया कंपनी को। कंपनी ने क्या किया, कंपनी सोल्ड, राज सोलोमन ने अपनी बिजनेस को कंपनी को बेचा और सोलोमन ने क्या किया, सोलोमन ने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। उसके बाद सोलोमन कंपनी ने शेयर्स और डिबेंचर्स ये दो अलॉट किए टू सोलोमन। वो क्या रहा है, सोलोमन ने अपना बिजनेस बेचा सोलोमन कंपनी को, सोलोमन कंपनी ने एक्सचेंज में क्या दिया, शेयर एंड डिबेंचर्स दिए। क्या दिया, शेयर्स एंड डिबेंचर्स दिए। हुआ क्या, आगे जाकर जब कंपनी लिक्विड होने जा रही है तो सोलोमन जो है he was also debenture holder. As per the principles of liquidation, debenture holders will be paid first and then the creditors will be paid and then the creditors will be paid. क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि इस केस के अंदर जो क्रेडिटर है कंपनी का, थर्ड पार्टीज जो है, उसके पहले सोलोमन जो कंपनी का ओनर है उसे पैसे पे किए जाएंगे क्योंकि वो डेमेज होल्डर भी है। तो लॉ कहना चाह रहा था कि भले ही वो डेमेज होल्डर खुद हो, एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेपरेट एंटिटी, कंपनी और शेयर होल्डर अलग अलग लोग होते हैं। कंपनी मेंबर्स आर डिफरेंट इन द आइज ऑफ लॉ। आप ये समझ लो कि भले ही मिस्टर राज जो है, भले ही मिस्टर राज जो है वो खुद ही डेमेज होल्डर है, फिर भी मिस्टर राज एज अ शेयर होल्डर और मिस्टर राज एज अ डेमेज होल्डर विल नॉट बी काउंटेड एज द सेम पर्सन एंड वो ओनर माने नहीं जाएंगे। कंपनी को शेयर होल्डर को अलग अलग माना जाता है, इसीलिए हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि वी आर पेइंग टू द ओनर, वी आर पेइंग टू द डिबेंचर होल्डर। हेलो, एंड दिस हाउ योर एलिमेंट ऑफ द टॉपिक, द मॉक पेपर गेट्स ओवर हियर। 3 मार्क के लिए बहुत हार्श है खुशबू ये सॉल्व करना। 3 मार्क में क्या क्या लिखोगे? इफ यू जस्ट सी हियर हाउ मच, ये पार्ट जो 3 मार्क के लिए पूछा गया है, इट्स हार्श। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, वेरी हार्श। और यहाँ पे हम लोगों ने हमारा मॉक पेपर खत्म किया है। आई हैड वन मोर मॉक पेपर टुमारो मॉर्निंग ऑफ मॉक पेपर 2।